या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। बिस्मिल्लाह, आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, अल हय्युल कय्यूम। या मौलाए मेहरबान, या इमाम ज़मान मदद फरमा। आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में कुछ इल्मी नुकात लेकर हाजिर हुए हैं, जिसके लिए मौलाए मेहरबान से दरख्वास्त है कि या मौला, हम गरीबों को तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी इनायत फरमाना, ताकि हम कुछ इल्मी काम, कुछ इल्मी खिदमत कर सके। मौला, या मौला मेहरबान, तेरे मुबारक नाम में बरक़ात भी है और हमारी रूहों के लिए शिफा भी है। मौला, या मौला मेहरबान, तेरे ही मुबारक नाम से हम इस सेशन का आगाज़ करते हैं। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी, हाज़िर इमाम, हाज़िर इमाम, हाज़िर इमाम। तमाम साथियों को एक बार फिर इस गरीब और नाचीज़ की जानिब से दुआए या अली मदद कबूल हो। आज हम वक्त की मुनासबत से रोज़ा और रमज़ान के जो इस्माइली अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। Today we will try to keep this session in Urdu and English both, क्योंकि हो सकता है कि ये लेक्चर हमारे उन भाई बहनों के लिए जो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है, उनके लिए भी बहुत ही कारआमद साबित हो। But I will explain everything in both languages so nobody is left out, and at the end, if you hear any words, any terms or terminologies that I did not repeat in English and Urdu, आप बराए मेहरबानी उसको पूछ लेना ताकि हम उसको कवर कर सकें। हमारे सामने पहले कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के जवाबात हम खुद इसी सेशन के अंदर आज से देंगे। सबसे पहले जो सवाल है, the very first question you see on your screen, रोजा क्या है और उसके मानी क्या है? अगर हम रोजे के मानी को समझते हैं, what is the meaning of रोजा? To restrain oneself. रोजे के मानी है अपने आप को रोकना। उससे दूसरा सवाल सामने आया, किस चीज से रोकना? After saying the meaning of the roza is to restrain oneself, then the question arises, restrain yourself from what? और उसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या ये खाने पीने के रोकने के नाम रोजा है या
खाना और पीना और मुंह चलाना, खाना पीना और मुंह चलाना एक सिंबल था, एक मिसाल थी. Was the eating, drinking and moving your mouth, talking, was this a symbol? Or how do we understand Roza in Ismaili Tariqa? I will continue to emphasize this part. There is the Shariati part of the Roza and there is the Batini part of the Roza. As we are following the Imam-e-Zaman, the Ismaili Tariqa, our emphasis would be on learning the Zahiri and Batini Roza. We have done many sessions on understanding the Batin of our Tariqa. So by now, we all know there is a Zahir and there is a Batin of every practice in Islam. As you can see on your screen, there is a chart. And you see in this chart, one thing is visible, और वो क्या है कि हर चीज एक सीढ़ी के ऊपर चल रही है. आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हर चीज एक सीढ़ी के ऊपर है, हर चीज एक सीढ़ी के ऊपर है, यानी कि दर्जा ब दर्जा हर चीज चलती है. और इंशाल्लाह हम इसको मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे. As you can see on your screen, that everything is on steps, step by step, moving forward. So look at the very first chart, and in this chart what we are showing, the time of Shariat. So we are talking about first 200-300 years of Islam. In second chart, you see Tariqat, and we are covering another 200, 300, 400, 500 years of Tariqat. Now, before we go into the Haqiqat and Marifat, what do you notice on this chart? Let me make this chart a little bit more bigger so we can see it more visibly. In no time, other steps are missing. आपने एक चीज पर गौर किया यहाँ पर कि शरीयत के ज़माने में भी आप देख रहे हैं कि ये शरीयत का ज़माना है, उसके अंदर भी कुछ हिस्सा तरीक़त का होता है, कुछ हिस्सा हकीकत का होता है और कुछ हिस्सा मारिफत का होता है. हालांकि ये कौन सा ज़माना है? शरीयत का ज़माना है. ये ज़माना है, राइट? ये शरीयत का ज़माना चल रहा है. लेकिन शरीयत के ज़माने में भी तमाम चीज़ों का हिस्सा होता है और इसकी अभी एक्सप्लेनेशन होगी इंशाल्लाह, आपको अच्छी तरह से और समझ में आने लगेगा. You notice in every single time, in every single age, even in the time of Shariat, there was some part of Tariqat, some part of Haqiqat and some part of Marifat. But the majority was
in the time of Shariat is the Shariat. Let's try to understand that. Do as you are told to do. बस शरीयत क्या है? जिस तरह से बोला गया वो करो. उसकी मिसाल जो है वो एक बच्चे की सी है. एक छोटे बच्चे को माँ अपने वक्त पर दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, निलाती है और सुला देती है. The example of Shariat is like a small child where mother feeds the baby, clean the baby and put the baby to sleep. Baby has no say-so. Baby has no say-so in what mother is doing to this baby. That is the example of Shariat. शरीयत के ज़माने में जो बोला गया वो करना है. उसमें चू चुरा नहीं होता है. You cannot ask when and why and what. You do as you are told. That is Shariat. If we look at the time of Shariat, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself have changed the Shariat within his 22 year of prophecy. Not one time, not twice, but many times. He changed some of the Shariat from the previous prophet, the Shariat-e-Isa. He changed some of the practice of Shariat-e-Musa, which was practiced in that time. And then the Shariat that he himself imposed was also changed during the 22 year of prophecy. Meaning, the साहिब शरीयत. इसका क्या मतलब हुआ कि जो शरीयत का मालिक है, और उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होते थे, वो शरीयत के मालिक थे और उन्होंने शरीयत को वक्त के मुताबिक बदला. जिस तरह से एग्जाम्पल दी गई कि एक माँ वक्त के हिसाब से बच्चे को दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, निलाती है और सुलाती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, the example is like their mother and a child. The mother decides what a child needs and accordingly she changes the diet. When to have more milk, when to have more soft food, how many hours the child will sleep. That mother decides. And she can change that according to the baby's need. इसी तरह से शरीयत के अंदर साहिब शरीयत जो होता है, the Lord of the Shariat. Sahib Shariat in the time of Shariat is the time of the Prophet or time of the Imams. They are the Sahib Shariat and accordingly they make the adjustment depending on the followers. बच्चे के नीड के मुताबिक उसको बदला जाता है, कस्टमाइज किया जाता है according to the need of that followers in the need of their child. If you look at this chart one more time in the Shariat before we move into the Tariqat, in the time of Shariat 50%, meaning half of everything, was focused on doing things. 5 time namaz,
नवाफिल की नमाज, रात की नमाज, मिडिल ऑफ नाइट की नमाज, शुक्राने की नमाज, ये नमाज वो नमाज. You see that? It was focused on the practice, because child is growing up, the mu'mineen are learning, so they need to be emphasized more and more and more. Practice, practice, practice. उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए हर किस्म की नमाज को सिखाया गया. ना सिर्फ 5 टाइम की नमाज, बल्कि शुक्राने की नमाज, रात की नमाज, ये नमाज वो नमाज, नवाफिल की नमाज, हर नमाज को प्रैक्टिस करवाई गई सिखाने के लिए. जिस तरह से बच्चे को बार बार दूध पिलाया जाता है ताकि वो सेहतमंद हो जाए, मजबूत हो जाए. उसके अंदर ही आप देखें को उसको, अब उसकी माँ जो है वो उसको लोरी सुनाती है, कभी उसको ABCD सिखाती है, कभी उसको 1 2 3 सिखाती है, लेकिन वो बहुत ही कम पोर्शन होता है. Just like that, in the Shariat, there was very small portion of learning and teaching, and that was only 25% of the time. 50% of the time was practical action. 25% time was how to do this, just like a mother teaching a child. In the same time, there were some mu'mineen who had elevated themselves, who were closer to the Imam of the time and closer to the Prophet of the time. They went further and they were practicing haqiqat. The same haqiqat we practice today. उसमें से कुछ लोग थे कि जिन्होंने इमाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना करीब से फॉलो किया कि वो शरीयत के ज़माने में रहते हुए ही हकीकत के ज़माने में पहुंच गए. टाइम चेंज नहीं हो गया. टाइम डिड नॉट चेंज. They themselves elevated themselves to the next level and the next level. For example, Salman Farsi, Abu Zar, Misgar. There were few around them who took the tariqat from the shariat and then haqiqat from the tariqat and elevated themselves. But there was very small portion of that, and there was only 15%. Remember, this is just a chart of example. I did not go there to count. This is just a chart of an example. ये एग्जाम्पल समझाने के लिए है कि हर जमाने में कुछ हिस्सा तरीकत का होता है, कुछ हिस्सा हकीकत का होता है और कुछ हिस्सा मारिफत का होता है. तो उसी जमाने में भी लोग आरिफीन बन गए, यानी कि मारिफत को पहुंच गए. अगेन द एग्जाम्पल ऑफ सलमान फारसी, जो अहले बैत में से हो गए. कौन से जमाने में? शरीयत के जमाने में. What does that teaches us? That even in the time of Shariat, there were people who were learning, who were following the Haqiqat, and who were reached to the level of Marifat. उससे हमको पता चला कि शरीयत के ज़माने में भी कुछ लोग शरीयत के साथ साथ तरीक़त को सीख रहे थे और हकीकत को पा रहे थे और मार्फत तक पहुंचे थे, अहले बैत तक पहुंच गए वो. Let's come to the tariqat. In the time of tariqat, you notice the shariat went down a little bit and tariqat came up a little bit,
Haqiqat came up little bit and Marifat came up little bit. This was the time where Imam were teaching more of the tariqat, because now we have done with the practice. ये वो ज़माना था जब इमाम मज़हब के हकीकत को समझा रहे थे, हमको तरीका बता रहे थे. They were teaching us that हमारे जो नमाज पढ़ना है, हमारा जो रोज़ा रखना है, हमारा जो हज करना है, हमारी जो जिहाद है, वो क्यों और किस लिए है, क्यों और किसके लिए है. और उसकी मिसाल जो है वो एक यंग मैन की तरह है. उसकी एग्जाम्पल जो है वो एक यंग मैन की तरह है. आपने यहाँ पर देखा, उसकी ये मिसाल है एक यंग मैन की. क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको सिखाने में आया कि क्यों कर रहे हैं हम ये. Why am I feeding you? So you can become stronger. Why am I giving you shower? So you stay healthy. Why you have to sleep so much? So you can be rested. ये इसको सिखाने में आता है एक बच्चे को. अब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया. उसकी मिसाल क्या है? 6 साल 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे की. और ये तरीक़ेकार उस वक्त रहता है जब तक वो बच्चा मुकम्मल वाइज नहीं हो जाता है, मुकम्मल सीख नहीं लेता है, तब तक ये तरीका चलता रहता है. This tariqat, you notice now, is equivalent to Shariat. So practice and learning is same. The practice and the learning is both at the same level now. But what is we need to understand, the Shariat went down about 20%. Tariqat came up about 5%. But Haqiqat also came up 5%. And Marifat went up 10%. Because now Mu'mineen are learning, they are able to move forward. So it was no longer focused on do as I told you to do. Let me tell you why you are doing what you are doing. So focus changed to why and how. The namaz, why and how. Roza, why and how. Zakat, why and how. Hajj, why and how. It was taught by the Shariat, Sahib Shariat, Sahib Zaman, the Imam of the time. So they would modify the percentage, so more focus or evenly focus on the knowledge and evenly focus on doing the Shariat. So they can move to the next level. Remember, it's step by step. If you are standing in one place and never move from Shariat to Tariqat to Haqiqat to Marifat, what would be your example? Your example would be of that child who's suckling on the mom's breast for the milk. Can a child say, for rest of my life, I'm going to only drink milk from my mother's breast? No, the child has to grow, has to move on. Can a child say, I'm going to keep eating baby food? No, the child has to move on. Can a child say, my mother going to continue to feed me and put me to sleep? No, child needs to move on. आपने देखा कि एक बच्चा सारी जिंदगी दूध नहीं पी सकता है और ना ही वो बेबी फूड खा सकता है. उसको आगे 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 बढ़ना होता है. अगर आज कोई कहता है कि नहीं मैं तो सिर्फ शरीयत को ही फॉलो करूंगा
और कोई बात नहीं सीखूंगा, ना तो मैं तरीक़त को मानूंगा, ना मैं हकीकत को मानूंगा, ना मैं मार्फत पे जाने की कोशिश करूंगा। तो उसकी क्या मिसाल होगी? एक ऐसे बच्चे की मिसाल होगी कि जो कहता है कि मैं सारी जिंदगी माँ का दूध पीऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। That is not logical, that is not natural, and that is against the human nature. That is not human nature. Human nature is that we move forward. हम जाहिर में तो फॉरवर्ड हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको बातीन में भी और अक्ल के अंदर भी, हमारी थॉट प्रोसेस के अंदर भी हमको मूव होना है आगे। For whatever reason, we grow up physically and we understand that we cannot be just drinking milk, we cannot be just eating baby food. We understand that somehow, but we forget sometimes, and we stick and stay on the single step of Shariat, and we never move on. That is unnatural. That is against the human nature. Human nature is to move on and on, move forward, up and up and up. हम ग्रो हो जाते हैं ना, हम बच्चे नहीं रहते, हम ग्रो होते हैं। Now let's come to the third level, हकीकत। Ismaili tariqa today, since the Farman of 1885 of Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi, हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो, ने फरमाया आज हम हकीकत में है, हमारा तरीका हकीकत का है। अगर हमारा तरीका हकीकत का है तो हमारी परसेंटेज के अंदर फर्क आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Look at this chart again. You see, the hakikat changed in the time of hakikat. Remember, we are talking about the hakiki tariqa now. We are no longer talking about the people who chose to stay in Shariat only, or people who chose to stay in tariqat only. There are people who have said, no, I'm going to be just like a baby because it's very comfortable, my mom going to feed me. I'm not talking about them. And I'm not talking about people who said, tariqat, I enjoy it because I like to learn, but never practice. Because hakikat required practice with knowledge. What does hakikat require? Practice with knowledge, not blind faith. Look at the example of that on the bottom. Example of the hakikat is like an old man. एक आदमी जो बड़ा हो जाता है, old doesn't mean 100-year-old, old means जो समझने लगता है, जो बड़ा हो जाता है अपने सोच और समझ में, अपने तरीक़ेकार में. This can be anyone between 20 and 60-year-old, and you will find some 60-year-old who are not grown up. You will find 40-year-old who are not grown up. We are not talking about them. We are talking about people who have physically, spiritually and intellectually have grown up. हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी और अक्लानी तौर पर भी बड़े हो गए हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं. What do they do? वो क्या करते हैं? वो ज्यादा हकीकत के अंदर बिलीव करते हैं, यानी कि उसका हर एक्शन उसके अक्ल के मुताबिक होता है. इमाम ने क्या फरमाया? आवर तरीका इज द तरीका ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि हम जो भी एक्शन करते हैं उसके पीछे एक समझ होती है, और ये समझ कहां से आई थी? तरीकत से आई थी. हमारे एक्शन कहां से आए थे? शरीयत से आए थे. You see, we do not live the Shariat, but the portion of the Shariat has gone down.
from 50% to 30% to 20%. The portion of the tariqat went down from 30 to 20, but the portion of the haqiqat went up from 20 to 30% now. यानी कि हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारा जो तरीका है, हमारा जो दुआ है, नमाज है, हमारी जो ज़कात है, दसून है, हमारा जो हज है, यानी कि इमाम की तरफ घूमना, ये सब को सब हकीकत पर होता है. और हकीकत क्या है? वो ट्रूथ है. What is हकीकत? That truth which we have learned and which we have practiced. But now we no longer doing what we are told to do. We are doing what is right to do. Because Imam not only told us what to do, he taught us the meaning behind it. हमारे दाइयों पीरों ने हमें उसके पीछे की जो हकीकत थी वो हमको सिखाई. अगर हम गिनान पढ़ते हैं, फरमान सुनते हैं और किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर क्या फायदा? हम हकीकी है, हम बातीनी है. हमें अपने तरीके के अंदर जो उसका बातीन है, द ट्रूथ है, इसके अंदर जो मग्ज है, एसेंस है, वी शुड बी फॉलोइंग दैट. And that should be the large portion of our practice. Large portion of our practice. अभी भी हम 20% शरीयत हमारी दुआ पढ़ते हैं. हमारी 3 शरीयतें हैं, दुआ, दसून और चांद रात की मजलिस. लेकिन वहां पर हमारा मजहब खत्म नहीं हो जाता है. वहां पर हमारा मजहब, बल्कि ये तो खाली 20%, only 20% of our religion sits on those 3 things. Other 20% sits on learning the true knowledge of Imam. True knowledge of Imam. 20%. 30% is applying the knowledge of the Imam, the batin of our tariqa, and that is हकीकत. इस हकीकत के ज़माने में क्या होता है? एक और चीज़ चेंज हो जाती है, और वो है मारिफत. ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारिफत की तरफ जाने लगते हैं. इफ यहां पर एक चीज जो बदल जाती है वो ये है कि हकीकत को फॉलो करने की वजह से मारिफत का नंबर भी बढ़ जाता है. लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, इफ यू अंडरस्टैंड द हकीकत, द एसेंस, द बातिन, तो फिर मारिफत पर बुलंदी होने लगती है. We will move up to the marifat. I hope you appreciate and understand the true meaning of दर्जा बदर्जा. मौला फरमाते हैं, इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा बुलंद होती है. Imam says, the soul with ilm, knowledge, not information, the hakiki knowledge will elevate step by step by step. These are the steps. You see on your screen, those are the steps. At the end, I will pose another question for us individually. You do not need to answer to me, you do not owe answer to anyone on this line. You need to answer that to yourself. Let's come to marifat. You can see the time of marifat, if we have followed this step, then more and more people will move toward the marifat. And this is the time of Qiyamah, when the knowledge, the hakiki knowledge will be given to everybody. It will be no longer confined to a small group of people. आज वो ज़माना आया है कि जहाँ पर हकीकी नॉलेज इसी तरह से
सबके लिए खोल दी गई है, जबकि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले ये बात नहीं थी। हम गरीब सिर्फ इंफॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे, कोई हकीकी नॉलेज नहीं मिलती थी, जो हकीकी नॉलेज थी वो समझ में नहीं आती थी। लुक एट टुडे, आज आप इतना सुबह को जल्दी उठकर, और वो इलाके में जहां पर अभी रात के 7-8 बज गए हैं, why we are gathered here today? Because we are the lover of the true knowledge. We want to move from Shariat to Tariqat to Haqiqat and inshallah into the Marifat. That is the goal. आज हम क्यों यहाँ जमा हुए हैं? ताकि हम अपने उस कॉलम के अंदर आ जाए, हम उस सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाए जहां पर हमारे जाने का मकसद था। And what is the example of that? Example of that is a man who is wise. आप ये देख रहे हैं आखिरी एग्जाम्पल, ये सीढ़ियां हैं, ये आप ब्लू देख रहे हैं, ये सीढ़ियां हैं। आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज उस मकाम पे पहुंचे कि जहां पर आप एक बच्चे की तरह नहीं, आप एक अक्लमंद इंसान की तरह, मैन विद ट्रू नॉलेज, अ वाइज मैन, एक वाइज मैन की तरह आप मजहब के ऊपर चल रहे हैं। यू नो लॉन्गर आर अ बोर्न बेबी, यू आर नो लॉन्गर अ यंग मैन, यू नो लॉन्गर जस्ट एज्ड, but you are a wise man. How did you become so wise? With the true knowledge of Imam. Alright, so let's summarize some of this. Again, you will see everything is on step. You see that? हर चीज सीढ़ियों पर है, step by step by step by step. Everything is on steps, rank by rank by rank. So there are Shariat which never changes, and that is called Atal, permanent Shariat, and that is Shariat-e-Ilahi. कुछ शराइत है, कुछ शरीयतें हैं, कुछ लॉज है जो परमानेंट है, और वो क्या है? डू गुड, अच्छे काम करो, डोंट किल, डोंट हर्ट अदर पीपल, किसी को मारो नहीं, किसी को हर्ट नहीं करो, प्रे एंड प्योरीफाई, इबादत करो, अपने आप को पाक करो, एंड गिव चैरिटी. You will find these laws in all of the books, all of the books. I don't care if this book is Gita or book of Hindus, the books of Judaism, book of Christianity, book of Islam, books of Dais and Peace and Ismaili Tariqa, or any Tariqa of the world for that matter. आप हर मजहब में ये चीजें पाएंगे. कोई भी मजहब हमको इस कोर परमानेंट शरीयत लॉ से बाहर नहीं ले जाता है. कोई भी मजहब होता है, they all stay within this permanent shariat, the Shariat-e-Ilahi. Then comes Shariat-e-Nabawi. Shariat-e-Nabi sits on Shariat-e-Ilahi actually. But what does Prophet do? In their respected time, they tell us what is good. खुदा ने फरमाया ना, आप अच्छा काम करो. प्रॉफिट्स उसको डिफाइन करते हैं कि अच्छा काम क्या है. इमाम डिफाइन करते हैं उसको अच्छा काम क्या है. एंड दैट इज कॉल्ड शरीयत नबवी. बट ये टेम्पररी शरीयत होती है, उसको वजी शरीयत कहते हैं, इम्पोज की हुई शरीयत. क्यों? कि what is good in one time may not be good in other time. That's why in Shariat-e-Ilahi, God leaves it open box. Do good.
prophets in their respective time and imam in their respective time defines what is good. And I'll give you an example. Jihad karna, hukum of the prophet, with the order and the amr of the prophet. Jihad was part of the goodness, part of doing good. आज फिजिकल जहाद नहीं है. आज किसी को मारेंगे आप या किसी को काफिर कहेंगे आप और किसी को बेदीन कहेंगे आप, तो वो इमाम के फरमान के खिलाफ है, क्योंकि इमाम ने क्या फरमाया, अपने दीन भाई को और दूसरे मजहब को बुरा नहीं कहना. Do you see that? Shariat changed. Shariat-e-Nabawi is a wazi, temporary but forced law according to the time. Do good. Do not hurt others. Pray 5 times or 3 times in their respected time. Zakat, percentage of the sown changes. Roza, 30 days Roza, Sabbath, once a week Roza, or 365 days Roza. You see that? Wazi Shariat is a temporary Shariat and it could be changed. There was a Sabbath, once a week Roza. There was a Roza for 30 days, and then there is a Roza of every single day of your life. But when we come to understand the word Roza or even Jihad, Jihad did not go away. Physical Jihad went away. Roza did not go away. Physical Roza went away. Zakat did not go away. Physical Zakat went away. Hajj did not go away. Physical Hajj went away. Because where are we? Why? Because we are in the time of Hakikat. We are in the time of wise men. So things change. That's why it's called Shariat al-Nabawi, a wazi, temporary Shariat, which could be changed according to time, and only one person can change this, not you and me. साहिब शरीयत उसको बदल सकता है वक्त के मुताबिक, और वो कौन होता है? Prophets in their time and imams in their respected time. साहिब शरीयत या तो नबी और रसूल होते हैं या इमाम अपने ज़माने में साहिब शरीयत होते हैं. अब आए हम शरीयत इमाम या शरीयत ज़मान. आपने देखा, you don't see very much in शरीयत ज़मान. You see that? आप इतना ज़्यादा शरीयत ज़मान में नहीं देखते हैं. आपने देखा कि शरीयत इमाम और शरीयत ज़मान के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आती है, क्योंकि शरीयत ज़मान जो है वो कांस्टेंटली बदलता रहता है. वो कांस्टेंटली बदलता रहता है. इसलिए शरीयत ज़मान यानी कि वो लोग जो इमाम ज़मान, साहिब ज़मान, प्रेजेंट एंड लिविंग इमाम को मानते हैं, उनके नज़दीक शरीयत, तरीक़त और हकीकत वो होती है कि जो इमाम फरमाते हैं, और वो शरीयत ज़मान होता है. यानी कि इमाम ज़मान डिफाइन करता है कि क्या हमको करना है और क्यों करना है और उसका बातिन क्या है. वो कौन डिफाइन करता है? इमाम डिफाइन करता है. वो इमाम ज़मान डिफाइन करता है. वहां पर एक चीज आप नोट करेंगे, और वो क्या है? फ्रीडम फ्रॉम द फोर्स लॉ. व्हाट वाज द फोर्स लॉ?
अभी हमने सीखा था ना कि फोर्स लॉ क्या थी, ये फोर्स लॉ था। वजी शरीयत टेम्पररी बट फोर्स लॉ जो हमको शरीयत के ज़माने में सिखाने में आता है। अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ बेबी। उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती से दूध पिलाती है, ज़बरदस्ती से खाना खिलाती है, ज़बरदस्ती से नहलाती है, ज़बरदस्ती से सुलाती है। Now think of a man or a woman of 20, 30, 40 year old. Can a mother do that? एक बच्चा जो आपका कॉलेज चले गया है, क्या माँ फोन करके कह सकती है बेटा तुम अभी अभी खाना खा लो, खाने का वक्त हो गया है, अभी सो जाओ, अभी सोने का वक्त हो गया है? वो कहेगा माँ मैं कॉलेज में हूं, मेरा स्टडी का टाइम है, मेरे एग्जाम का टाइम है। Can a mother call a child who's living in a dormitory in the college, in the university, and say, oh my son or my daughter, it's time to drink milk, time to sleep, time to take a shower? No. So what does Shariat-e-Zaman, Shariat-e-Imam do for the Mu'minin? Freedom from the force law. आपको एक मिसाल चाहिए इमाम के फरमान से? इमाम ने कहा जब आपके पास वक्त हो आप तस्बीह ले लें और अल्लाह को याद करें, इमाम को याद करें, रसूल को याद करें, किसी भी नाम को ले लें आप। एक ज़माने में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जान से फिदा हो का फरमान है कि आप बीमार हो और चारपाई पर लेटे वो हो तो 4 आदमी उठा के उसको जमात खाने ले आए और इबादत जमात खाने में आके करे। जस्ट प्रीवियस जामा, लुक एट इमाम टुडे, फ्रीडम ऑफ फोर्स लॉ, फ्रीडम फ्रॉम इट। इमाम सेज if you cannot come to Jamaat Khana, take your tasbih, remember Allah, remember Muhammad, remember Ali, remember any of the Imam. Freedom from the force law. And we should not forget the declaration of Eid-e-Qiyamah. What was the declaration? Look at this, the very last one right there. The freedom from the chains of Shariat. Eid-e-Qiyamah में क्या हुआ कि लोगों को शरीयत से की बंधन से खोल दिया गया, शरीयत की बंधन से खोल दिया गया। As a Ismaili, as a follower of the Imam Zaman, if we wanted to put shackles in our feet, on our ankles, if you want to put the shackles on our ankle of the Shariat, be my guest. You have freedom to do that too. But Imam has freed you from the Shariat. But he has imposed some Shariat according to this time. You still have to follow 3 times dua. You still have to follow the Son. You still have to follow Chandrat Madlas. Those are the minimum Shariat the one must follow. Very minimum. He has given you freedom even in that. Even in that, he has given you freedom. If you cannot make it to Jamaat Khana for dua, look at this 1 year we are going through. Stay home and remember. Take your tasbih. In the time of Shariat, you must go to masjid, you must do your 5-time namaz, you must do another 5 times of nawafil, you must do a namaz of shukrana, you must do this, you must do this, you must do this. शरीयत के ज़माने में सब चीज़ों को फोर्स किया जाता था क्योंकि वो बच्चा था, उसको मजबूत करना था, सिखाना था। लेकिन आज के ज़माने में इमाम ने क्या फरमाया? अब अपनी जगह पर सेफली, stay safe,
अपने अपने घरों में याद करें, दुआ पढ़ें. The haqiqat is what Imam says. और उन्होंने हमें फ्रीडम दी. आज more than ever Imam had given us a freedom. Do we choose to take the freedom, or do we choose to put the shackles on our ankle? हमें शरीयत को पालना है तो वो हमारी मर्जी है, लेकिन इमाम ने हमारे लिए आसानी की है. Let's come to the conclusion of this. For today, remember this is a two-part session, and we will continue on the batin side of Roza and the pillars of the Shariat. Hadith Nabawi says, and what I'm trying to show you here in this, that there are steps. And this is Hadith Nabawi at the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, Shariat is my saying. What I'm saying, that is Shariat. Tariqat is my action. Haqiqat is my state of mind. Question to you, remember I said I will ask a question. Question to you and everyone on this line is, and you do not owe me any answer. You do not have to say it on this line. You do not owe this to anyone, but to yourself. You yourself ask yourself, are you at the level of haqiqat? At the state of mind? Haqiqat is state of mind. Because you know the truth. You know what to do. That is state of mind. If you are still told what to do, then you are at the level of Shariat. If you are still learning why we are doing it, then you are at the level of Tariqat. But if you have the Hakiki knowledge, if you have learned the Hakiki knowledge, you are at the state of mind. Look at Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam saying this over 1400 years ago. And Marifat is my secret. That is the goal for the Mu'mineen. To get to the Marifat, the secret of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and secret of the Imam-e-Zaman. That is the goal. So very last part, Roza-e-Zahir, Roza-e-Batin. Roza-e-Batin, not of the Zahir. Roza is surely not done to stay hungry during the daytime, and neither to keep eating all night long. रोज़ा क्या है? रोज़ा ये नहीं है कि हम दिन के अंदर भूखे रहें और सारी रात खाना खाते रहें, जो अहले शरीयत अक्सर करते हैं. क्या ये रोज़ा है कि दिन के वक्त भूखे रहें और सो जाएं और पूरी रात खाना खाते रहें और जागते रहें? रोज़ा बातिन नॉट ऑफ द ज़ाहिर. रोज़ा ये नहीं है कि दिन में भूखा रहे और सारी रात खाते रहें. The last thing that we will look at in this is not the complete, we can share this with everyone online, the complete Pir Pidniyat Jawab Mardi chapter on the Roza and Roza Batin, and we will talk more on it tomorrow morning in our part 2 of this session. The true moment is such who from the Shariat to Tariqat and Tariqat to Haqiqat moves forward. ये हकीकी मोमिनों की निशानी है कि वो शरीयत से तरीक़त और तरीक़त से हकीकत में आते हैं. Mullah Imam Mustansibullah II says in Pir Pindiyat Jawab Mardi book. The Pir Pindiyat Jawab Mardi book is the encyclopedia of Ismaili Tariqa.
आपको अगर इस्माइली तरीके को हकीकी तौर पर जानना है, स्टेप बाय स्टेप, पीर पिंदा जमा मर्दी इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दैट। आपको उसके अंदर तमाम शराइत मिलेंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इमाम से हकीकी मोमिन वो है जो शरीयत से तरीकत और तरीकत से मारिफत की तरफ जाता है। हकीकी मोमिन वो नहीं है जो शरीयत पे बैठ जावे या तरीकत पे बैठ जावे। आगे देखें, will enter into हकीकत which is the बातीन of शरीयत एंड तरीकत। हकीकत क्या है? शरीयत और तरीकत का मग़ज़ है। और आपको असूल दीन के फरामीन के अंदर ये अल्फाज इमाम ही की ज़बान से मिल जाए। असूल दीन के फरमान में जो पहला फरमान है, इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने उससे फिदा हो। Last line, and we will end with this. Roza is for the year long. Roza of the month is to find that one night, and I will leave it on that. रोज़ा पूरे साल का है और रोज़ा जो था उसका मायने था वो एक रात को ढूंढना। और मैं यहाँ पर रोकूंगा ताकि हमारे पास वक्त हो सोचने का कि बातीन क्या है। And remember, tomorrow morning we will cover the other half of this session on the batin side of it. So let's open the floor here so we can take any question or comments we may have. Ji. Shiraz, can I ask you a question? Ji Shiraz Bhai, Yali Madad. Yali Madad. Aziz Bhai, the question is that Zahiri fasting is not mandatory for us. I look at it from the point of Hakiki fasting, which involves Zahiri, which involves Ibadat and Bangi, and we do it all year long and not 30 days. It's more than 30 days. So are we justified in not actually doing a Zahiri fasting as what other Muslims do? So to answer this question, we have to look at it and see, do we understand the Roza of Batin? If we do according to the Farman of the Imam, then Roza is compulsory on the Mu'mineen for 365 days. But we must learn and practice the essence of the Roza. Essence of the Roza. If we practice that, then you are absolutely right. We must learn, and inshallah tomorrow we will learn how to keep Roza for 365 days. The essence of the Roza. Because if we are following the Shariat and Shariat only, now if you wanted to keep a physical Roza by not eating during the day, what is the purpose behind that? And if that is to go on a diet or keep a Roza to make somebody happy, or if you understand the Roza, because you're keeping Roza so you feel the hunger and you may become more generous toward others. So there can be a benefit of a physical Roza, and we will talk about that tomorrow. There is a benefit if we understand. That is the key. Thank you, Shiraz Bhai. Sir, I think we have one question. As Imam keeps Zahiri Roza, so we should also? I don't know. I have not seen any farman or anywhere where Imam had made a statement that he keeps Zahiri Roza. Imam is Amirul Mu'mineen.
when he gives us a farman, and as the leader of the Mu'mineen, he is the one who practices before he gives to us. Imam is the most purified as the ALWAAZ, and you can see that in the Surah 33, Ayat 33, he is the most purified. The reason for the Roza was to purify oneself. Reason for the Roza was to purify oneself. Imam is the most purified. He keeps Batini Roza every day of his life. Every day of his life. And that's why he is also advising us, giving us a farman to keep the Batini Roza. Remember, not eating for 5, 10 hours or 15 hours a day, then you can see half of the world are on the diet today, and they do that every single day actually. That is not Roza. Understanding the batin of the Roza is important and to keep. There is a benefit of physical Roza, and we will talk about that in the morning tomorrow in our second session. G. So we have one more question. So it's Farman says 360 days. Why is 5 days missing? Yes, very good question. Remember, Islamic calendar has 360 days. Good question, thank you. So I don't see any questions in the chat. If not, we can surely stop here, and inshallah we will meet with the second session tomorrow morning. And you can see on your screen we have 2 more sessions this afternoon at 3 o'clock Central Time and 4 o'clock Central Time. It will be a continuous session, 2 sessions this afternoon. Thank you everybody. Ya Ali Madad. 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 Ya Ali Madad.